First topic for today's class, you just note it down. Number 5, I am going to discuss. Number 5, you note the velocity time graph. The velocity time graph for a body moving with uniform acceleration. Moving with uniform acceleration. And here you should add one more thing. The body starts from rest. The body starts from rest. That is, we can say u is equals to 0. The body starts from rest. That means initial velocity is 0. Yes, sir. Okay, have you understood this heading? We are Yes, going yes, to sir. draw what kind of graph? Velocity time graph. GT time graph. And in this graph, velocity is plotted along y-axis, and time is plotted along x-axis. Velocity will be plotted along which axis? Y-axis. Time along, X-axis. okay, time along x-axis. So I'm drawing here the two axes, y-axis and x-axis. This is y-axis, this one is x-axis, this is origin. Okay, now about this velocity time graph, if the body starts from rest, the graph is a straight line. The graph is a straight line passing through origin. Okay, so here we can write the velocity time graph for a body moving with uniform acceleration u0. In this case, the graph is a straight line, a line segment we can say. The graph is a straight line passing through origin. Okay, so along y-axis we are plotting what? Velocity. Along x-axis we are plotting time. This is origin. Now this is supposed to be point P, and from point P we are drawing two perpendicular on the two axes. Just look at the screen and try to understand. PQ on time axis and PR on velocity axis. PQ on time axis, PR on velocity axis. And from this graph, we can find out uniform acceleration.
And uniform acceleration is nothing but it is slope of graph. And last class I discussed about slope. Yes, sir. So I discussed that slope is equals to ratio of dash by dash. What was that? PR by PQ. PR by PR by PQ. PR by PQ. PQ. No. More properly, it is OR by OR by OR by no. We are considering this triangle. This angle is the angle theta. So when I speak about slope of the graph, it 10 should theta. be the ratio, it is 10 theta, but it should be the ratio of which two side of this triangle? Triangle OPQ. P by B, perpendicular by base. base. Perpendicular base. So we should write PQ by OQ. Yes, sir. And from this graph, we can write PQ is equals to OR. So it is OR by OQ. Have you understood? Yes, sir. OR by OQ. So we can easily find out uniform acceleration. And from this graph, we can find out another thing. And that another thing is distance covered or displacement. Distance covered or displacement. Distance covered and displacement in case of velocity time graph will be, here in this case, area of triangle OPQ. In velocity time graph, distance can be calculated if you know the area of the geometrical figure which is formed between graph and the time axis. Between the graph and time axis, this is the triangle. And area of triangle, if I ask you, Aryan, what is the formula of area of triangle? Half into base into height. So can I write half into OQ into PQ? Yes, sir. So half into OQ into PQ. So here, can I write half into OQ into OR? Since we know that PQ is equals to OR. Yes, sir. Have you noted down everything? I am discussing the theory part, and later on we will apply all these information in solving numericals related to graph. We will also use this information to derive the three equations of motion. Okay. So have you noted down everything from the screen? Noting down. Sir, noting. After completion, just inform me. Sir, done. Done. Yes. Slope, have you completed? No, sir. Finished almost. Aryan, by that time, you just look at previous 4 points that we discussed in the last class. Yes. Yes. Finished. Okay. We discussed till number 5, and now I am going to discuss point number 6. Here I am going to discuss velocity time graph.
velocity time graph for a body moving with velocity time graph for a body moving with non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Okay, and the body starts from rest, so u is equals to 0. In this case, now you already know that velocity time graph may velocity is plotted along which axis, if I ask you? Y-axis. 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 Time is plotted along X-axis. 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 So velocity along y-axis, time along x-axis, and here the graph is a curve passing through origin. Passing through origin. And in your level, calculation is not required, okay, for non-uniform acceleration. So what will be the nature of graph? Just look at this. The graph is a curve. The graph is a curve and it is passing through origin. Why I have written that it passes through origin? The reason is that the body starts from rest. So this is velocity time graph. This is origin. This one is y-axis and this is x-axis. So I discussed point number 6. Have you understood this point, point number 6? Yes, sir. Have you noted down, both of you? Yes, sir. No, sir. And Aryan, in between, you just look at the previous points of Yes, last class by the time Slok is completing. Sir, done. Okay. So we are moving to another screen, point number 7. And here in the point number 7, we will discuss about velocity time graph for a body moving with uniform acceleration. At this time, we are considering that the body does not start from rest. The body is not starting from rest. U is not equals to 0. So in this case, the nature of the graph, just you look at the nature of the graph in this case. Just draw the axis, y-axis and x-axis. And this is origin. The body does not start from rest. In this case, the graph will be a straight line, but the graph is not passing through origin. The graph is not passing through origin.
This one is y-axis, this one is x-axis, and here it is time, here it is velocity, okay, and the graph is like this. So we can write, in this case, the graph is a straight line. The graph is a straight line inclined at certain angle, okay, inclined at certain angle, and it is not passing through origin. It is not passing through origin. Okay, it is not passing through origin. Now, in this case, we can calculate uniform acceleration. और मैं आपको बता देता हूं, this one is the most important topic that we are discussing today. If you can understand about this particular graph, this graphical representation, then you will easily be able to solve the three equations of motion. You will be able to prove that three equations of motion graphically. और ग्राफिकली उनको प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आपको किसी भी एक इक्वेशन दिया जाएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड यू विल बी आस्क्ड टू प्रूव इट ग्राफिकली. Today I am discussing the theory part, and next class we'll discuss how to prove the three equations of motion graphically. अभी ये थ्योरी समझ में आने से ही आपको नेक्स्ट क्लास जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो समझ में आएगा. So uniform acceleration, and you know that acceleration is equals to what? Slope of graph. Yes, sir. In case of velocity time, इसको slope of graph. लेकिन आप यहाँ पे ग्राफ में क्या मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना. Let P be a point, huh? Just focus on the graph, huh? Let P be a point. From P, I'm drawing a perpendicular on time axis. Let this be PQ. Let this be PQ, and from P, I am drawing another perpendicular on velocity axis. Let this be PR. Then I am drawing another line which is parallel to OQ as shown in the figure. So this is supposed to be ST. ST. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ. अब आप राइट एंगल ट्राइंगल जो देखोगे, दैट इज SPT. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म, एंड दिस is the angle of inclination. This is the angle of inclination. So ये ट्राइंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस. तो आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा, व्हाट इज स्लोप हियर, कैन यू टेल मी? PT by ST. PT by ST. ST. Good. PT by ST. And PT by ST. PT by ST. Can I write RS by OQ? Yes, sir. Yes, sir. Can I write OR minus OS by OQ? Yes, sir. देखो तो ठीक से. One Instead of minus RS, can I write OR? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So why I am converting everything in relation to O, in relation to origin? Because in graph, measurement will be given where? On y-axis or x-axis, and all measurements in the graph are taken from where? All the measurement in graph are taken from where? From the origin. Starting sir. point, सभी measurement का starting point क्या होगा? Origin. Origin. So have you understood this part of explanation, how to find out uniform acceleration? Yes, sir. Now, second part, I am discussing how to find out distance covered or displacement. Okay.
And last part, in point number 6, I discussed that in velocity time graph, distance covered can be calculated by knowing the area Yes, sir. between graph and the time axis. Yes, Okay, sir. so here distance covered will be the area between this graph and the time axis. Between the graph and the time axis, which geometrical figure you can see? Between the graph and the time axis, can you? Triangle. Huh? There is one Triangle. triangle and there is one. Triangle and one rectangle. Okay, there is one triangle and one rectangle, but if you combine the triangle and rectangle, you are getting a trapezium, I think. Yes, sir. Yes, sir. So distance covered is equals to area of trapezium. And do you know the formula of area of trapezium? Sir, No, half sir. into sum of parallel sides into height. So we can write half into sum of the parallel side OS plus PQ into height will be ST. Can I write? So can you Yes, sir. repeat the formula? Okay, formula is half into sum of the parallel side into height. Formula of area of trapezium, half into sum of the parallel sides into height. So can I write half into OS plus PQ into ST? पैरेलल Yes, sir. साइड उस ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम कौन सा है यहाँ पे? OSPQ. उस ट्रेपीजियम में OSPQ. parallel side OS plus PQ and height is what? ST. Now I am doing some ST. modifications. Just look at here. Instead of PQ, can I write OR? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Instead of ST, can I write OQ? Yes, sir. लास्ट में सब हम O का रिलेशन में क्यों लेके आ जाता है? Why I am converting everything in terms of origin? Because it started from origin. Yes, so all measurements here they are starting from origin. अब Origin. मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का, अनदर मेथड. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का अनदर टेक्निक, S is equals to area of triangle SPT plus area of rectangle OSTQ. अगर Yes, हम ट्रेपीजियम के जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल को प्लस कर देगा तो हमको ट्रेपीजियम का एरिया ही तो मिलेगा. Hmm. समझ में आया आपको? Aryan, have you understood? Yes, sir. Slok, have you understood? Yes, sir. So area of triangle, can I write, look at the triangle SPT, can I write half into base into height Yes, sir. plus area of rectangle L into B? Yes, sir. Or we can write B into L, बात तो एक ही है. Can I write OS into OQ? Yes, sir. Yes, sir. So half into ST can be replaced by O- OQ OQ. Yes. Yes, sir. and OT can be replaced by SR, Yes, sir. then OS into OQ. Hmm. Then half into OQ instead of SR, can I write OR minus OS Yes, sir. plus OS into OQ? Have you understood? Yes, sir. देखो लास्ट तक मैंने सबको किससे कन्वर्ट कर दिया? इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन. सबको इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन लेके आ गया, सभी मेजरमेंट को. सो जब हमको एक्चुअल ग्राफ मिलेगा, आई कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट. आई कैन इजीली फाइंड आउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, अगर आपको ये पॉइंट नंबर 7 समझ में आया है तभी आपको नेक्स्ट क्लास ठीक से समझ में आएगा. सो कोई डाउट होने से यू कैन आस्क. If you have any doubt, you can ask. नहीं है कोई doubt? So, I am moving to another topic. Have you noted down everything? Yes, sir. Sir,
Sir, no. Okay, I'm waiting. By that time, slope, just look at the previous 4 points related to first class. एक बार उसको go through कर लो आप. Okay, sir. Done? Yes, sir. Yes. Okay. So we can move to another point, point number 8. Velocity time graph for a body moving with non-uniform acceleration, and here the case u is not equals to 0. In this case, the graph is a curve. The graph is a curve starting from a point on y-axis. The graph is a curve starting from a point on y-axis. You can draw the graph directly. The graph will be like this. The two axes, y-axis, x-axis, origin, and the graph will be like this. Okay, this graph represents non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration, and u is not equals to 0. And here velocity is plotted along y-axis, time is plotted along x-axis. So point number 8, have you noted down? Calculation is not required at your level related to non-uniform acceleration. We're done. Aryan, Sir, 1 minute. So, yes, sir, done. okay. Point number 9, we are going to discuss about In total, how many points are there? how many. पेशेंस खत्म हो गया लोग. हैव पेशेंस. जल्दी पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे. जितने पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल है वो सभी चीज मैं बता रहा हूं, और इसके बाद भी ऐसा नहीं होगा आप उस कंफर्ट जोन में होंगे. आपको इनको और डीप पढ़ना पड़ेगा टू आंसर द क्वेश्चंस. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, क्लास 9 इज वेरी डिफरेंट है. क्लास 1 से लेकर 10 तक मुझे जो लगता है साइंस का जो लेवल है
क्लास 9 में ही सबसे ऊपर है। 9 का फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग होता है वो फ्यूचर में साइंस ऑप्ट करने लायक बचता है, और जिसका 9 में फाउंडेशन खराब हो जाए वो फ्यूचर में साइंस लेने का सोच भी नहीं सकता। सो वेलोसिटी इज टाइम ग्राफ फॉर a body moving with uniform velocity, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 0। अगर एक बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा? जस्ट लुक एट हियर। इस केस में ग्राफ कैसा होगा? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और इस केस में ग्राफ कैसा होगा? जस्ट लुक एट हियर। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to time axis, parallel to x axis। ग्राफ ऐसा होगा। with time speed और velocity is not changing, so this side y axis में हम लोग velocity plot करते हैं और x axis में हम लोग time को plot करेंगे। So along with time, if the speed is not increasing, if the speed is not decreasing, the graph will be a straight line parallel to time axis. So you can note it down. The graph is a straight line parallel to time axis. Parallel to time axis. The graph is a straight line parallel to which axis? Time axis. Axis. Time axis. And here, if I ask you, what is the acceleration? तो इसका आंसर होगा 0। एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर करता हूँ मैं, एंड फ्रॉम P I have drawn a perpendicular PQ on time axis. PQ has been drawn on time axis, so A equals to acceleration 0 है यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में यहाँ कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर बना है देखो आप, Rectangular. Rectangle. So distance और displacement is area of rectangle। कौन सा rectangle? O O यहाँ पे O R P Q. R, P Q P Q हुआ। O R O R P Q. PQ। और ठीक है। एंड इसका एरिया तो हम लोग जानते हैं L into B या फिर B into L लिख सकते हैं। So can I write Yes, OR into OQ? Yes, sir. So it is, this one is very easy। अगर आप ग्राफ ऐसा देख लेते हो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। इट मे बी आस्क्ड what type of motion is represented by this graph, it may be asked। Sir, Any question? sir, it might be a square also. It might be a square, then you will have to Yes. write area of square, L square, side square। Have you completed, both of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are going to discuss next point। लोग कौन सा पॉइंट में पहुंच गए हम लोग? 10. 10th। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ Yes, sir.
ठीक है, मजा आ रहा है तुम लोग को। नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity time graph for a body moving with uniform retardation. और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी इज 0, मतलब फाइनली द बॉडी स्टॉप्स। ओके, द बॉडी स्टॉप्स। सो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। The body moves with uniform retardation. So the graph will be like this. The graph will be like this, straight line starting from a point on velocity axis and it touches the time axis. It touches the time axis. The graph will be like this. तो ये है y axis, this one is x axis, this is origin, this side we will plot velocity, this side we will plot time, and this graph will represent uniform retardation. Uniform retardation. So we can write here the graph is a straight line. The graph is a straight line starting from a point on y-axis, velocity axis, and touches the time axis. It touches the time axis as shown. Okay, it touches the time axis as shown. So the velocity time graph for a body moving with uniform retardation graph is a straight line starting from a point on y-axis and touches the time axis, या फिर हम लोग बोल सकते हैं x-axis. From this graph, we can calculate uniform retardation. Uniform retardation is equals to slope of graph. इस बार स्लोप के लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और स्लोप मैंने आपको समझाया था, स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस. सो यहाँ पे स्लोप के लिए अगर हम इसको मार्क कर देता है एस पी, इसको मार्क कर देता है एस क्यू. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस पर्टिकुलर ग्राफ? OP by OQ. OP by OQ. OQ, perpendicular by base. So in this way we can find out uniform retardation. We can also find out distance covered. We can also find out what? Distance covered. और displacement. कुछ आइडिया है आपको कैसे फाइंड आउट करना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? If I ask you. Sir, area of the triangle. Good. Area of triangle. Which triangle? OPQ. OPQ. And can you tell me the area here? Half into OQ into OP. OQ into OP. Have you understood? Yes, sir. समझ में आ रहा है? स्कूल में स्टार्ट Yes, हो गया sir. ये सब टॉपिक? नहीं सर. नहीं हुआ. जब No, sir. स्टार्ट होगा तो आपको चैंपियन फीलिंग आएगा. Yes. ठीक है.
मोशन चैप्टर स्कूल में स्टार्ट हुआ है आपके? हाँ Yes, सर। sir. तो स्टार्टिंग का पोर्शन समझ में आ रहा है जो वहां पे समझाया जा रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। कुछ भी एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्कूल में देने से आप हमको बता देना, वो टॉपिक में समझा दूंगा if anything extra is discussed. Okay, so point number 10, I hope you have noted down everything from the screen. Yes, sir. Done? Aryan, have you completed? Yes, sir. Slok? यस सर। Now कितना नंबर तक पहुंच गए श्लोक हम लोग? 11। 11। अभी है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12। हाँ सर, दिस इज 11। Sir, this is 11. This one is 11. Okay, Yes, sir. this one is 11. This one is point number 11. Just look at the graph. Just look at the graph. ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक स्पेशल ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, स्पेशल वन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस वन. जस्ट वेट. You can start drawing along with me. So if you look at here, if you look at this velocity time graph, this is origin, this is supposed to be OA part, AB part and BC part. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. आपको अगर पूछा जाए in this velocity time graph, OA represents what kind of motion? If you can answer. Sir, uniform स्पीड। Uniform speed. वेलोसिटी। वेलोसिटी। Slok is saying uniform velocity, Aryan is saying, Sir, same uniform velocity. but it is not correct. It is uniform acceleration. Acceleration. वेलोसिटी Acceleration. टाइम ग्राफ अगर इंक्लाइंड होता है अपवर्ड तो वो क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म Form acceleration. एक्सेलरेशन। Yes, sir. Form acceleration. And here in this graph, if I ask you, AB is representing what kind of motion? Rest. The body is at According to Aryan, the body is at rest. Rest. Look, रेस्ट। no, this is representing uniform velocity. आपको आज समझाया था मैंने कि ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, it will represent what? Uniform velocity. yes, sir. Uniform velocity. If I ask you, BC is representing what? Sir, uniform retardation. रिटार्डेशन। Good. It is uniform retardation. Uniform retardation. Okay. Yes, sir. Now, just look at the modification which I'm going to do in this graph. Just look at here. From A, I am drawing one perpendicular on time axis. From B, I am drawing another perpendicular. So I'm writing here D and E. And from A, I'm drawing a perpendicular on velocity axis. Let this be point F. तो आपको अगर यहाँ पे पूछा जाए कि what is the acceleration
एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? जहां पे एक्सेलरेशन हुआ उस पोर्शन में एक्सेलरेशन कितना है? Acceleration for which triangle you are going to select to find out acceleration part? So, Speak loudly. Which triangle? There is acceleration, OAD. there is uniform velocity, there is retardation. So कौन सा पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे? कौन सा पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे? इस ग्राफ में 3 पोर्शन है, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, OAD. 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 So acceleration is equals to slope of the graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ. Slope of the graph. तो slope of स्लोप the बता graph. दो आप मुझे, ओएडी का स्लोप बता दो. OA. AD by OD. एडी बाय OD. OD. ओडी, परपेंडिकुलर बाय बेस. सो कैन आई राइट ओएफ बाय ओडी? Yes, sir. So if I ask you, how will you find out retardation here? Retardation will be Don't know. Retardation, which triangle you are going to select to find out retardation? BEC. 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 So BE by EC. it is slope of graph and slope is perpendicular by base. So it BE is by EC. BE by EC. EC. So can I write OF by OC minus OC OD plus minus DE. OE? OC minus OE, yes. देखो तो ठीक से समझ में आ रहा है क्या? Retardation is negative of acceleration, slope of the graph, BE by EC, perpendicular by base, and BE is equals to OF and EC is equals to OC minus OE. Can we write? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको पूछा जाए कि AB पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0. 0. AB पोर्शन में एक्सेलरेशन 0 है. 0. अब आपको अगर पूछा जाए कि आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सेलरेशन पार्ट, एक्सेलरेशन पार्ट का डिस्टेंस कवर्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? Area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल? OAD. OAD. Okay. Area of triangle OAD. Area of triangle, what is the formula you are going to use? Half into Half base into into base into side. Which base here? Which is the base? OD. OD. B. Height क्या होगा? DA. AD. DA or AD. AD. So can I write here? AD. Just wait. Can I write here? Just wait. So I'm writing here half into OD into क्या लिखना चाहिए मुझे? Half into OD into AF. OF. 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 OF एक्सिस में देखो, अभी तक स्टार्टिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी मेजरमेंट को कहाँ पे पहुंचा देते हैं? Origin. ओरिजिन Oh, से रिलेट origin. करते हैं और एक्सिस में पहुंचा देते हैं, वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस. सो डिस्टेंस कवर्ड इन एक्सेलरेशन पार्ट ऐसे निकालेंगे हम लोग. अगर मैं आपको पूछता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर रिटार्डेशन पार्ट, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? S is equals Sir, to this will be. Sir, area of triangle only. area of which triangle? BC. BEC. 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 So S is equals to area of triangle BEC.
Yes, So sir. area of triangle will be what in this case? Half into EC into EB. Half into EC into EB. BE or EB. BE. Okay. Yes, sir. So can I write half into for EC? What should I write? OC minus OE. Good. OC minus OE. Hmm. And for BE, what should I write? OF. OF. Have you understood श्लोक? Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ. तो हम लोग एक ही ग्राफ में अभी बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं एक ही साथ. वी आर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स. तो आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड इन एक्सेलरेशन पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन रिटार्डेशन पार्ट, और फिर एक और अलग से आप कैलकुलेशन कर सकते हो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग जीरो एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, इस केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? Area of rectangle. Rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा रेक्टेंगल? AB. AD. ABED. ABED. ED. ओके, ABED का एरिया हमको कैसे बताओगे आप लोग? GAD. Half. It will be AB. AB into AD. AB into, O. AD. speak loudly, श्लोक. AB into AD. AB into AD. Okay, or we can write AD OF. to D. जितना हो सके मुझे एक्सिस में रखने में ठीक लगता है. डी एक्सिस में है कि नहीं, टाइम एक्सिस में. तो अब AD, फॉर AD आई कैन राइट व्हाट? OF. आप में से कौन हमको बताएगा इंस्टेड ऑफ DE व्हाट शुड आई राइट? OE minus OE minus D. D. OE माइनस OE minus DE. D. OE माइनस DE. OD. D minus. D तो फाइंड आउट करना है. OE माइनस OD करने से आ जाएगा. समझ में आया आपको? OE माइनस OD करने से क्या मिलेगा आपको? D. DE. So in this way we can find out distance covered or displacement in that part. अब आपको अगर टोटल डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करना है तो एक तरीका है कि आप तीनों डिस्टेंस को, अगर इसको हम S1 लेता है, इसको अगर S2 लेता है और इसको अगर S3 लेता है, तीनों को ऐड कर दो. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है, कोई आइडिया है आपके पास? Area of trapezium. इंटेलिजेंट, गुड. दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये पूरा जो आप ज्योमेट्रिकल फिगर देख रहे हो तो वो एक ट्रेपेजियम है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. कौन सा ट्रेपेजियम? इफ आई आस्क यू. OABC. OABC. BC. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड. तो Yes, sir. AB प्लस OC इनटू हाइट. हाइट हम लोग AD ले सकते हैं. तो हाफ इनटू AB फॉर AB कैन आई राइट DE फॉर Yes, sir. DE प्लस OC यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग इनटू AD. फॉर AD आई एम राइटिंग OF. Yes, sir. आया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So 1/2 here half. यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं. DE को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? DE को एज OE माइनस OD. OE माइनस OD एंड OC को मैं ऐसे ही रखता हूँ. इज इट पॉसिबल?
into OF. Can I write? Yes, sir. Have you understood, both of you? Yes, sir. So total distance covered is equals to what? Area of trapezium OABC, and area of trapezium आप कैसे calculate करोगे? By the using the formula half into Half sum into of sum of parallel sides into sides height. into height. Into height. So you note down everything from the screen. So as you have completed, we can move to another topic, and point number 12. Point number 12. यहाँ पे मैं एक और स्पेशल ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. Now here, origin and velocity time graph. Velocity time graph. इस बार आपको velocity time graph ऐसा दिया गया. ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट करते हैं इसको. And this is OAB. If I ask you, OA represents what kind of motion? Sir, uniform acceleration. Uniform acceleration. If I ask you, AB represents what kind of motion? Uniform retardation. Uniform retardation. Uniform retardation. OA represents uniform acceleration, AB represents uniform retardation. Okay. And I am drawing a perpendicular on time axis from A, let this be AC. Now, if I ask you, find out acceleration. If I ask you, find out acceleration. Do you have any answer? What will be the acceleration? Huh? OA. OA. OA, no? How to find out acceleration in velocity time graph? How to find out acceleration in velocity time graph? क्या भूल गए क्या? Velocity time Slope. slope. Okay. So यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ. From A, I am drawing another perpendicular AD on velocity axis. Now acceleration is equals to slope of graph. Slope क्या होगा इधर बता सकते हो? For acceleration part. AC by OC. AC by OC. OC, perpendicular by base. Yes, sir. और यहाँ AC is equals to OD. OD by OC. OC. Now, if I ask you, find out retardation, negative of acceleration is called retardation, and that is also equals to slope of graph. Yes, sir. इस बार हम लोग AB के बारे में बात कर रहे हैं. So, क्या होगा slope यहाँ पे? AC by CB. AC by CB. CB. And AC is equals to OD. Yes, sir. CB is equals to what can we write? OB minus OC. OB minus OC. OB minus OC. OC.
Okay. From this graph, if I ask you, find out total distance covered. Total distance or total displacement we can say. तो कैसे find out करोगे? Area of triangle OAB. Good. Area of triangle. Area of triangle OAB. B. Okay. Area of triangle OAB. Area of triangle OAB कौन बताने जा रहा है? आर्यन. Half. Area. Half into base Half height. into Half OB into Okay, slow. half into OB into AC. Just wait. Slow. You try. half into Speak loudly. Speak loud. half into OB into BA. BA नहीं होगा. Now you try. Aryan. Half into OB into AC. Good. AC. Half into OB. OB है base. Into height AC होगा यहाँ पे. Yes, Height sir. AC. So what can we write here? Half into OB. Half into OB into OD. OD. ओके. तो ये टोटल डिस्टेंस. लेकिन अब आपको मैं पूछता हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड पार्ट फॉर एक्सेलरेशन पार्ट एंड रिटार्डेशन पार्ट कैसे निकालोगे? So first one will be area of triangle OAC, एरिया and ऑफ second will ट्रायंगल OAC. OAC. जस्ट वेट. स्लो. अगर आपको पूछा जाए S2 कैसे निकालोगे? यहाँ का डिस्टेंस कवर्ड S1, यहाँ का डिस्टेंस कवर्ड S2. हाउ विल यू फाइंड आउट S2? S2 area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC. So Aryan, just explain Yes, this sir. part. Area of triangle OAC. How will you write it? Half into OC into AC. OC into AC. AC. And can you write half into Half into OC? OC into OD. OD. Okay. So slow. Now you can try. Half into Half CB into into half into CB. ट्रायंगल ABC में क्या बताया आपने? CB. सुनाई नहीं दे रहा. जोर से बोलो थोड़ा. CB. P कहाँ से आ गया? B. B. CB. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हाफ इनटू बेस. बेस क्या है? CB. CB बोल रहे हो क्या? हाँ. ओके. CB into AC. इनटू AC करेक्ट है. सो हाफ इनटू CB को कैसे स्प्लिट कर सकते हो? श्लोक आप ट्राई करो. CB. CB को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ O. श्लोक Oh, एनी आइडिया? thinking. नहीं समझ में आ रहा? आर्यन. Sir, CB will be OB minus OC. गुड. OB माइनस OC. OB माइनस OC. श्लोक यहाँ देखो. OB ये पूरा लेंथ है. इसमें से अगर हम लोग OC माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? BC. ये पोर्शन ही तो BC है. एंड इनटू AC. AC क्या होगा फिर? AC. AC को किससे रिप्लेस करना चाहिए? AC को हम लोगों ने यहाँ भी रिप्लेस किया था. AC को यहाँ भी रिप्लेस किया है. तो AC को रिप्लेस करेंगे हम OD. लोग OD से. ओके. तो यहाँ से ऐसे आप डिस्टेंस कवर्ड इन एक्सेलरेशन पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन रिटार्डेशन पार्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो. टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट करना मैंने आपको समझा दिया. एक्सेलरेशन पार्ट, रिटार्डेशन पार्ट
Have you understood? Yes. Have you understood, both of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just note down everything. So number 13, we have discussed distance time graph where the graph coincides with time axis. If graph coincides with time axis, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होने से भी द बॉडी इज एट रेस्ट। फिर नंबर 14 में हम लोगों ने डिस्कस किया है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो ग्राफ ऐसा कर्व होगा एंड इट शोज डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इट शोज व्हाट, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। फाइनली द बॉडी स्टॉप्स। सो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे if the body is at rest, the graph will be like this. Have you noted down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for this number 14 graph, will we have to write anything like the graph is a curved line with Yes, you can write the graph is a curve starting from there's a curve from velocity axis velocity axis to time and axis. touches the time. Touches time axis. The graph is a curve starting from a point on velocity axis and touches the time axis. Okay. Now I am giving you 2 minutes break to drink water for you, and after 2 minutes we'll meet again and I will discuss some questions. Aryan, Slok, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just look at the question there. What type of motion is represented by the following graphical representations? I will ask you questions one by one and you will have to answer. You can So we start. have to draw also. Yes, you can start drawing. I will modify each of these graphs. First one is supposed to be velocity time graph. And if I ask you, जिसको पहले आंसर पता चल जाता है वो पहले आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। If velocity time graph is straight line like this, what type of motion is represented? Acceleration. Uniform acceleration. Uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay, slow. आपने पहले आंसर दिया। Uniform
acceleration. Now this is displacement time graph. And if I draw like this, it will represent Uniform velocity. uniform velocity. Good. आप लोगों का स्पीड का पता नहीं चला मुझे. Uniform velocity. This one is velocity time graph. This is the origin. What type of motion is represented by this if it is a straight line? Uniform retardation. Good. It represents uniform retardation. And this one is displacement time graph. Displacement time graph, if it is like this, what do you mean by this? Uniform velocity. No, it is rest. If you look at this graph, I have not discussed this one, but if you look at this one with time, distance or displacement, is it increasing or decreasing with time? It is the same. It is the same. So body is at rest. If distance and displacement is not changing with time, the body is at rest. Now this one, velocity time, if it is a straight line like this, it will represent Uniform velocity. It will represent velocity time graph parallel to time axis. Uniform velocity. Uniform velocity. This is uniform velocity. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? Second option है zero acceleration. Yes. Okay, acceleration will be zero if the body moves with uniform velocity. Acceleration is zero. आप ये सेंटेंस भी कहीं पे नोट डाउन कर लो. If a body moves with uniform velocity, acceleration is zero, retardation is also zero. Then velocity time graph is this. What do you mean by this? Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Displacement time graph. This is the origin here. If displacement time graph is a curve, Non-uniform velocity. non-uniform velocity. स्लोप थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, आपका आवाज थोड़ा कम सुनाई देता है. Then this one, if I ask you, what type of motion is represented? Sir, first uniform acceleration and then uniform retardation. Good. First, uniform acceleration. Uniform acceleration. Acceleration, and then uniform Retardation. retardation. If I write A and B here, OA represents uniform acceleration. OA represents uniform acceleration, and AB represents uniform retardation. Have you understood everything? Yes, sir. Okay.